Hello everyone. So today we will be starting with a new colligative property, that is osmotic pressure. So osmotic pressure क्या होता है पहले वो समझेंगे, बट उससे पहले we will be studying what is the meaning of osmosis. So osmosis क्या है? osmosis हमने 10th में भी पढ़ा है, तो पहले ही osmosis समझने की कोशिश करो क्या है. It is the phenomenon in which, let me first write so that I can explain you, the phenomena of the passage of pure solvent from a region of low concentration to high concentration, number one, and number two, solvent side to solution side. सी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं सिर्फ उन्हीं के पैसेज की बात यहाँ पर हो रही है. और उनका पैसेज कहाँ से कहाँ होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड की तरफ. लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोर सॉल्वेंट पार्टिकल्स. अब ये जो पैसेज होगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये पैसेज कैसे होगा? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. So let's proceed to the next part now. Now when osmosis is completed, तब क्या होता है? प्रेशर दोनों साइड पर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है. When osmosis is completed, then pressure exerted on the semi-permeable membrane is same, क्योंकि दोनों साइड पर प्रेशर बराबर हो चुका होता है. So let's go and study in detail now. So here we go. देखो, सॉल्वेंट साइड पर क्या होता है? सॉल्वेंट साइड पर मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स. और ये कौन सी साइड है? ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? मोर प्रेशर विल बी देयर. More pressure is there, then what will happen? We write it properly. If more pressure will be there, then what will happen? They will move from low concentration to that of the more concentration side. So they pass through semi-permeable membrane towards the solution side, और किसकी तरफ जाएगा? हाई कंसंट्रेशन की तरफ. अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? It is expressed as PV is equals to NRT होता था हमारे पास. अब यहाँ पर ये जो प्रेशर है, ओस्मोटिक प्रेशर, उसको हम पाई से डिनोट करेंगे. पाई क्या होता है हमारा? ओस्मोटिक प्रेशर.
P को हम पाई लिखेंगे एंड N बाई वी आर टी हो जाएगा. अब N बाई वी क्या होता है? दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इज़ आर मोलारिटी. So that will be written as C into RT. So this is the multiplication sign I have removed so that there is no confusion. So this is molarity, that is capital M. क्योंकि हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मोलालिटी यूज़ करते थे, बट यहाँ पे मोलारिटी विल बी देयर. सो पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C stands for the concentration, और कौन सा वाला concentration term? Molarity. Next we have is R, which is gas constant, and then we have T, which is temperature. Now what happens is, see, pi is equals to given weight upon molecular weight into volume and RT. ये क्या है? This is the number of moles, which is equal to WB by MB. B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट को, और A रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को. सिंस A का ऐसा कोई काम नहीं है, इसलिए वो कहीं पर भी इक्वेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. नाउ most important thing which you need to note is the value of R. Values of R, see. If you use R as 0.0821 atm liter per mole Kelvin, then the pressure which you're going to calculate will come out in terms of atm. Now you can make out the conversions. So see, what is the conversion? 1 atm is equal to 1.01 into 10 raised to the power 5 pascals, which is in turn equal to 1.01 into 10 raised to the power 5 Newton meter inverse meter square, which is in turn equal to 1.01 bar. So 1 atm को अगर बार में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशनशिप रहेगा. अब हमारे पास आता है 1 बार में कितने atm होंगे. So that is 0987 atm. So this is the thing. Now sometimes what happens is, in some questions the height is also given while calculations of this thing, osmotic pressure is there. So what you need to do in such cases, see, when height is involved, then there is a different expression which we are supposed to use. See, that is pi equals to HdG. So H stands for the height and D is your density. It's not distance, it's density. And G stands for the gravitational acceleration. So this is again the formula, and pi is again what? Osmotic pressure, जो अभी हमने पहले किया. अब हमारे पास आता है आइसोटोनिक. किसको बोलते हैं? आइसोटोनिक. आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन. ये कौन से सॉल्यूशन होते हैं? देखो, आइसो वर्ड का मतलब क्या है? सेम. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है? सेम. ऑस्मोटिक प्रेशर. अब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तो तभी होगा जब दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा. हेंस द कंक्लूजन इज टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure and hence same molar concentration
at same temperature are called isotonic or osmotic solutions. Now, let me explain you with the help of an example. So listen to me very carefully. Stop writing for the moment. Just try to understand. See, we are taking copper sulfate solution. So copper sulfate solution is made up of copper sulfate, and since it's an aqueous solution of copper sulfate, so copper sulfate plus water is there, so water is going to act as solvent here and this is going to act as your solute here. So see, what ultimately happens is, this is the scenario. Now I'm going to put the line in the middle of that. So see, what happens is, this is compartment A, this is compartment B. Now in compartment A, I'm going to take the pure solvent. So this is the pure solvent, or I'll write water. Whereas on the B compartment, I will be taking copper sulfate solution or any solution, provided that's aqueous. That means the solvent taken here is water. Now in the middle of that, this line which is drawn, this is your SPM. SPM stands for semi-permeable membrane. Now what happens is, since pure solvent has got the greater pressure, so solvent particles will start moving from compartment A to compartment B. Isn't it this is going to happen? See. So number one point which is to be noted, that is solvent particles move from compartment A to B. Now the question is till what time? यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझो. सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे, कंपार्टमेंट ए से बी की तरफ जाएंगे. लेकिन क्वेश्चन ये है कब तक जाएंगे, तो कोई तो लिमिट होगी ना. अब होता क्या है यहाँ पर, ये ट्रांसफर्स तब तक होते हैं जब तक कि दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए. सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स takes place till the time when concentration is same on both the side and hence same pressure. Now see, what happens is, if suppose I have to change, like I have to I have to stop this flow, so what I need to do is I need to apply some extra pressure over here. So that is pi. That means, see, this P18 is the atmospheric pressure which is equal on both the side, that is in the copper sulfate solution as well as on the solvent side. So P18 क्या है, that is the pressure which is applied on both the side, यानी कॉपर सल्फेट पर भी ये उतना ही P18 है, that is atmospheric pressure, और आपका प्योर सॉल्वेंट पर भी उतना ही है. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, इफ़ यू वांट कि ये वाला फ्लो जो है रुक जाए, टू स्टॉप दिस फ्लो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को दूसरी साइड पे थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा. सो
this extra pressure is applied just to stop this flow. So this is one of the most important part of it. So see, ultimately I'm explaining it once again. यहाँ पे क्या हो रहा था, ध्यान से देखो. आप वीडियो को एक दो बार दोबारा कर आगे पीछे करके देख सकते हो, बिकॉज आई एम इरेजिंग दोज एरोज. So listen to, watch the video carefully. Don't give it a pause in the middle of that. Just watch the video completely. अगर आप आगे करके देखोगे तो you will miss that part. See, प्योर सॉल्वेंट में क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू बी. बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल्स इधर नहीं आए. तो वो नहीं, कब नहीं आएंगे, वो तब नहीं आएंगे जब यहाँ से भी आप उतना ही प्रेशर लगा दो. तो जो चीज़ यहाँ आने वाली थी अब वो रुक जाएगी. तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ है, ये जो मैंने रेड में सर्कल किया है पाई. सो ये है आपका एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज़ अप्लाइड जस्ट टू स्टॉप द फ्लो. अब ये PATM मैंने क्या लिखा है, PATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी भी आप कहीं पे भी वाटर रखते हो तो उसके ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है. So this is what it means. So this is the pressure which is applied just to stop the flow of solvent particles from compartment A to B. Now, one most important part about this colligative property is the measurement of osmotic pressure provide us the another method for determination of molar masses of solutes. So कौन से वाले solutes पे ये ज़्यादा emphasis करता है, that is the most important part. So this method is widely used to measure or determine molar masses of polymers and other macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं. सो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा, सिंस हम मॉलिक्यूलर मास तो हम किसी के भी थ्रू निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट थ्रू एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. बट फॉर पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल द बेस्ट मेथड टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास इज द ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्योंकि बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी कम हो रहा है, प्रेशर का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना. तो क्या होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी आपके पॉलीमर्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं. अगर आप टेम्परेचर उनको आप इंक्रीज़ कर दोगे तो ख़राब हो जाएगा. तो अल्टीमेटली दिस इज़ द रीज़न कि ये जो प्रॉपर्टी है इट हेल्प्स अस टू मेजर द मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स. सो लेट मी राइट दिस पार्ट. This method is advantageous over other methods as pressure measurement takes place at the room temperature So ultimately what happens is, in case of biomolecules,
बायोमॉलिक्यूल्स यही होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जनरली carbohydrate, proteins, so they are big polymers. So in case of biomolecules, molar mass is calculated with the colligative property that is osmotic pressure, because these biomolecules are not stable at higher temperature. And polymers, they have got poor solubility. Have poor solubility. So I hope it's clear. If any doubt is there, you can post it in the comment section. I'll try my level best to answer all your questions. Now moving on to the next part, see, osmotic pressure associated with the fluid inside the blood, यानी कि हमारे जो ब्लड के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होगा, यानी पहले तो उसकी हमें कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए. सो देखो, osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent, यानी कि क्या बता रहे हैं, पहले ये आपको बता रहे हैं कि ब्लड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, टू दैट ऑफ 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl. इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर जो सोल्यूशन, जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन के. उसे क्या कहा जाता है, यूज टू कॉल इट एज नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन. नाउ सी, अगर आप क्या करते हो, सपोज़ आपने क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया, इसमें आपका ये ब्लड सेल है. अब ब्लड सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.9% m/v. अब आपने क्या डाला, यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, 0.9 m/v है. अब क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो कहीं पे भी मूवमेंट होगी, नहीं होगी. सो नथिंग विल हैपन, दैट मीन्स नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. ठीक है. अच्छा, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज सी, if you are adding this, now इसका concentration क्या है, 0.9 m/v. now if you put a cell in the solution more than NaCl solution, that means ये वाला जो concentration है, ये देखो, this is more than 0.9. so in short, यहाँ पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन. हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, देखो यहाँ पर लेस सॉल्वेंट है और वहाँ पर क्या है, मोर सॉल्वेंट. तो अगर यहाँ पर मोर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, मोर सॉल्वेंट अगर यहाँ पर है तो इट विल मूव
towards high concentration side, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या होगा? अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि सेल से फ्लूइड बाहर निकल के कहाँ जाएगा? इनटू द solution. So fluid from cell goes into the solution. Ultimate result is shrink. आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. Now what will happen? ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक फ्लो. तो अब हम सॉल्यूशन की बात करें, हम सेल की बात नहीं करेंगे. सेल हाइपरटोनिक है, हम ये कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन जो है ये हाइपरटोनिक है. ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. सी, इफ placed in the solution whose concentration is less than 0.9%, then what will happen? Let's see what is going to happen. This is the case. Now I have taken one cell. So सेल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.9%. सेल और ये जो आपका सोल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.9 से कम है. So less than 0.9. So if it is less than 0.9, that means this is less concentration and this is more concentration. Less concentration का मतलब क्या है? More solvent particle. मोर सॉल्वेंट पार्टिकल जहाँ पर भी होंगे तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो concentration side to high concentration side. So ultimately what will happen? It will swell. The cell will swell. So जो वो liquid है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा? That will move into the, like it will move from this solution into this cell. So ultimately the cell is going to swell out. ये क्या है? फूल जाएगा. So ऐसे solution को जिनका concentration 0.9 से कम है, यानी आपके सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है, उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक सोल्यूशन. आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज जस्ट गेट बैक टू मी. यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. Now we will be studying the new concept, that is reverse osmosis. So let's go through that. Reverse osmosis. रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है? देखो, आप सबके घर में आरओ यूज़ होते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. आज मैं उसकी वर्किंग आपको सिखाऊंगी, हाउ इट इज़ गोना वर्क. सी, so there are two compartments. This is compartment A, this is compartment B, and now what happens is, in case of compartment A, we are going to keep the pressure greater than that of the atmospheric pressure. So not atmospheric pressure, that is the osmotic pressure, I'm sorry. So salt water I have taken, and here I have taken pure water.
सो सॉल्ट वाटर को ही हमें प्योरीफाई करना है, यानी सॉल्ट वाटर में से हमें सॉल्ट को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। ये हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि ये वाटर जो है वो ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में आ जाए और यहाँ से हम कलेक्शन ऑफ प्योर वाटर करेंगे। सी अब इसके अंदर क्या होता है, if the pressure is more than osmotic pressure, see osmotic pressure, अभी सपोज कर लो यहाँ पर लेट्स से सॉल्ट वाटर है और प्योर वाटर है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पर फ्लो इस साइड होएगा डायरेक्शन में। सो नंबर वन पॉइंट इज if no pressure is applied, flow from B to A. Now if on A side pressure applied just to stop the flow, see, just to stop the flow from B to A. So उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, osmotic pressure. In that case what will happen, no movement will take place, no movement of solvent particles will take place. अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, एक ही साइड पे यानी कंपार्टमेंट में ए में हम प्रेशर देंगे जो कि ज़्यादा होगा पाई से, यानी कि प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा कि अब आपका प्रेशर इस एरिया में ज़्यादा है, मोर प्रेशर, तो अब फ्लो इस साइड शुरू हो जाएगा। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर है, दिस अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो सिर्फ ये वाटर को ही आने देगी और इस एरिया में आपका प्योर वाटर आ जाएगा कंपार्टमेंट बी में, जिसे कि आप कलेक्ट कर लोगे। सो थर्ड केस इज इफ in compartment B pressure greater than osmotic pressure is applied, then reverse flow starts, that is from B to A, and SPM allows only flow of solvent particles. तो हम यहाँ पे क्या करें, डिसैलिनेशन कर रहे हैं, यानी कि सॉल्ट में से सॉल्ट वाटर था, सॉल्ट उसमें से सिर्फ सॉल्ट को हटा रहे हैं, वाटर को अलग कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अलाउ करेगा, hence water will be separated. And pure water can be collected. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, रिवर्स ऑस्मोसिस।